पुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवे ऋणा शुष्टुचुम्बितम् इतरलाग्विस्मा रणमीर्णाम् वितरवीरनस्ते अधामृतम् श्रीनंद नंदना यशोदा जी वना हे श्री दामोदर हे श्री माधवा. O hero, the nectar of your lips increases the pleasure of amorous meeting, and it eliminates all sorrow due to separation from you. Your ambrosial lips are passionately kissed by your singing flute, and they cause every human being who drinks that nectar, even once, to forget about all other attachments. O hero, please make us drink the nectar of your lips. Vitara Viranas te adhamritam. Bha Prakashika Vriti. All the words in this verse have deep significance with two specific meaning of the words adhamritam. Your lips, adhar, take away death, amrit, and the nectar, amrit, of your lips. So your lips have many wonderful qualities. The gopis tell Krishna they are nectarian and their juice is nectarian as well. Please give this nectar to us. Although you left us here and we are dying, when we remember the nectar of your lips, our desire for Surata increases. Surat matlab Surat Vilas. The Surat refers to a particularly exalted state of prema in which the gopis desire to meet intimately with Krishna. प्रेम विशेषमय संभोग इच्छा, ये एक बहुत हाई स्टेज होती है जिसको सुरति विलास कहते हैं. So they desire a meeting filled with karma. As explained earlier, Su means in special way and Rat means mixing together. So Surat refers to Krishna and the gopis meeting together in a special way and relishing great pleasure. And in that meeting, Shri Krishna's Adharmrit, यानी कि उनके जो lips हैं, increases this pleasure to a superlative degree. Regarding the word Surat, I cannot explain more than this. I have left practically everything hidden. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that the gopis address Krishna as Dhanvantri, the incarnation of Krishna who brought to the world the medical branch of the Vedas known as Ayurveda. Oh Dhanvantri, they say, we are searching for the medicine that will cure the disease of karma, from which we are dying, and we have come to you because we know you are the crest jewel of physicians. Please give us the particular medicine that can save us. Srila Vishnu Chakravarti Thakur explained the Surat Vardhana means that which increases the Surat. Means when Krishna is performing his pastime, he is increasing the desire of the gopis to meet or to make love. कैसी है? Weighing machine. Weighing machine. Suppose someone has decreased, the doctor has prohibited the intake of certain foods. The doctor may have said, do not take tamarind. However, when the diseased person sees
tamarind, he cannot resist it. And as a result, his illness worsens. Similarly, the gopis beseech Krishna to give them some medicine to cure their disease of karma, while also acknowledging that the medicine would increase the disease. Suratavardhanam Shokanashanam. Shokanashanam means the one who destroys the misery. Ima hold karna hai. So Shokanashanam means that which is which destroy the misery. The Gopi says that all their unhappiness will be destroyed by. Ima hold karna. So Suratavardhanam Shokanashanam. ठीक है, so that which destroy the misery. So the Gopi says that all their unhappiness will be destroyed by Krishna's Adhamrita. How? The taste of his Adhamritam is so nectarian that it will make them forget everything else. When a patient is suffering so much that a painful operation must be performed, his doctor may give him an injection of morphine as an anesthetic. Under the influence of this anesthetic, the patient becomes unconscious and cannot feel any pain. Anesthesia जिसे कहते हैं हम लोग. Similarly, the Gopi says, drinking the nectar of your lotus, your lips, make us forget everything else, including our body and all senses of the world around us. And thus, all our suffering goes away. Shok nashanam. है ना, लेकिन हम लोग तो भौतिक जगत में क्या बोलते हैं, पिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, है ना, सारे गमों को भुलाए चले जा रहे हैं. लोगों को लगता है हाँ, गुम भुलाने के लिए मैं तो पिए जा रहा हूँ. लोग शराब पीते हैं अपने गमों को भुलाने के लिए, बट वी ऑफन फॉरगेट कि व्हेन वी डू द नॉर्मल ड्रिंकिंग, वो हमारे जो जो स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है हृदय का, उसको और बढ़ा देता है. So, but how will you be able to afford this nectar of mine? Krishna asked, it is very precious. I can distribute it to all you all. Only if you are willing to pay a very high price. There is no justification for you to say this. Gopi, you are heroic when it comes to giving in charity. Near a person dying, there may be a compassionate onlooker who knows how to save that person and who wants nothing in return for his help. You are like this onlooker. You are watching us die. You have the medicine that will save us, and you can give it to us free of cost. Swaritave Runa. यानी कि Krishna fills his flute, Venu, with his Adhamrita. This creates swara, nad, or sound vibration. And therefore, the sound of the flute is called Venunad. Venunad, every word contains a sound vibration, and the word klim is the very sound emanating from Krishna's lotus lips through his flute playing.
तो क्लिम क्या है? एक्चुअली में ये वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये आ गया है, तो इट्स ओके, क्योंकि दिस इज कॉल्ड बीज मंत्रा. All the mantras which are Guhyam and given in Diksha, they start with this word. लेकिन जैसे होता है ना कि लाइक कोई व्यक्ति किताब को पढ़ के प्रेग्नेंट नहीं हो सकता. If a man reads a book, he cannot say, "Oh, my stomach is going out," or a female is thinking, "Oh, my stomach is going out. I'm feeling pukish. Maybe I'm pregnant." So after reading a book, a woman cannot get pregnant. There's a proper procedure to get pregnant. उसी तरीके से initiation doesn't happen if I am chanting this klim 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 again and again, or if you are reading klim, you're not initiated yet. ये केवल एक सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि जैसे कि प्रेगनेंसी के लिए यू नीड अ मेल एंड फीमेल, टू पर्सनैलिटीज, सेम वे दीक्षा के लिए यू नीड अ सिंसियर exalted guru and sincere disciple. And only when a guru is chanting this mantra, klim, in your ear, then only you're getting initiated. So the definition of klim is understood by this verse in Srimad Bhagavatam. Vanam chatat komal gobi ranjita jago kalam vamadarsha manoharan. Lord Sri Krishna saw the unbroken disk of the full moon glowing with the red effulgence of newly applied 1 million, as if it were the face of the goddess of fortune. He also saw the kumud, lotuses opening in response to the moon's presence, and kumud means kamal, and forest gently illuminates by its rays. Thus the Lord began to play sweetly on his flute, attracting the mind of the beautiful eyed gopis. यानी कि शरद पूर्णिमा की बात है. So it was evening time. The moon was golden and full and rising on the very reddish eastern horizon. The eastern direction is like the moon's beloved. It was as through by his rays, which are like his hands, the moon had taken a large quantity of red color and was decorating the face and the eastern horizon. Seeing this, Krishna at once placed his flute upon his lips and played a very sweet tune, Jagao Kalam. That tune is included in the seed mantra Klim. Upon hearing it, Radha Krishna and all the gopis thought, he is calling me alone, no one else. ये ना बड़ी philosophical बात है. If you try to understand it, I don't know how many of you will be able to understand it. I don't know how will you be able to understand it. भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, और वो जो क्लिम शब्द जो गोपियों ने बोला कि बांसुरी का पहला शब्द में क्लिम लगा, तो इस तरीके से बोला जा सकता है कि भगवान ने इन गोपियों को अपने पास बुलाने के लिए ये मंत्र बोला, जो कि उन्होंने अपने बांसुरी के माध्यम से बोला. तो अगर हम बोले कि हम में से कितने लोगों ने अपने गुरु, मतलब अपने, हम लोगों ने कितने लोगों ने कृष्ण की बांसुरी को सुना है? क्योंकि कृष्ण की बांसुरी जो है वो क्या बोलती है, क्लिम से स्टार्ट होती है. तो हम बोल सकते हैं कि हमारे गुरु ने जब हमें मंत्र दिया, तो वो जो मंत्र दीक्षा थी वो कृष्ण की, दैट वाज द साउंड ऑफ द फ्लूट ऑफ कृष्णा. तो यानी कि जब हमको दीक्षा मिलती है और हमें दीक्षा में मंत्र मिलते हैं, तो वो एक्चुअली में दैट इज अ साउंड वाइब्रेशन, दिस इज साउंड वाइब्रेशन ऑफ कृष्णास फ्लूट, है ना.
तो जैसे ही हमें गुरु की वाणी या गुरु हमें मिलते हैं, सिद्ध गुरु, और सिद्ध गुरु हमें दीक्षा देते हैं, तो हम लोग भी अपने सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर, भौतिक सुखों को त्याग कर, अपने गुरु की वाणी के लिए सब कुछ त्याग कर गुरु की सेवा के लिए अग्रसर हो जाते हैं। अगर हमने अगर हमने उस कृष्ण की उस बांसुरी की वाइब्रेशन को प्रॉपरली सुना हुआ है, तो जैसे इन गोपियों के साथ हुआ था। कितना डीप है यार ये, मतलब मेरे को शायद मैं हमसे समझा नहीं पा रहा हूँ। स्वरित वेणुना, यानी कि तुम्हारी जो, मतलब स्वर मतलब नाद और द साउंड वाइब्रेशन, और द साउंड ऑफ द फ्लूट इज कॉल्ड वेणुना। तो वेणु की जो 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 साउंड है, ये गोपियों को कृष्ण की तरफ खींच लेती है। एनीवेज, इस पे हम कंटेम्पलेशन कभी बाद में करेंगे। इसको बस समझना समझना ठीक है कि अगर कोई हमसे पूछे कि तुमने कभी कृष्ण की बांसुरी बजते हुए देखी है, तो हमें बोलना चाहिए हाँ, हमने अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को सुना है कि हमें कृष्ण की तरफ जाना है। सब कुछ त्याग कर, सब मोह माया को त्याग कर, और अपने सारे के सारे भौतिक सुखों को त्याग कर, अपने सारे के सारे मेंटल कंसेप्शन को त्याग कर, अपनी फॉल्स ईगो को त्याग कर, काम क्रोध लोभ मोह मद, इन इन पांचों अनर्थों को भी त्याग कर, और मत्सर्य को स्पेशली त्याग कर, और ये जो साउंड वाइब्रेशन है वो हमारे गुरु की वाणी में है। सो इट्स द बेस्ट रियलाइजेशन एनीबॉडी कैन एवर हैव। So this sound is a non-different from Krishna's Adhamrita, and then it emanates from his flute. The nectar of his lips comes through the flute and is heard as Venuna. This is why the gopis say Swarita Venuna. The nectar of your lips comes through the sound of your bamboo flute. The flute is male, which shows that even males do not want to relinquish this taste. What to speak of ladies? That flute is just a piece of bamboo. It is male and it is without consciousness. Still, it always tries to kiss your lips and wants never to leave them. तो ये तो हमने सुना ही था पहले भी, है ना। वेणु गीत का जो ये जो प्रसंग था, ये पीछे भी आया था। इसमें जब हम लोग जब हम लोग भजन ऐसे पढ़ रहे थे, तो जो कृष्णा क्या कह रहे हैं, अब देखो। इफ अ लेडी हैज कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज ऑफ द कामा, she should avoid a diet which is unfavorable to her condition. Her attachment to wealth, husband, son, sister, daughters, and other relatives. Give up all these, and then I can give you what you see. Definitely, अगर आपके अंदर काम वासना जाग रही है, तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करो। हमेशा वही खाओ जो कि प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ भक्तों के द्वारा बनाया गया है, या फिर तुमने खुद बनाया है। और फिर उससे क्या बोला उन्होंने कि अपनी अटैचमेंट जो होती है, वेल्थ, हस्बैंड, सन, सिस्टर, डॉटर, जितने भी रिलेटिव है, उसे कट डाउन करो। तो गोपी रिप्लाई, फर्स्ट गिव अस योर अधामृता, दैट विल अनेबल अस टू गिव अप ऑल दोज अटैचमेंट्स। द नेक्टर ऑफ योर लिप्स has such extraordinary qualities that if anyone drinks it, all of his or her attachments disappear. इतर राग विस्मा रणम निर्णम. Nirnam means of mankind or of human being. So the Gopi says all those who have tasted this nectar, both men and women, forget all material attachments and think, I must always drink the nectar of Krishna's lips. So there is no need for you to worry about your our bad diets. The diet. The Adhamrita is not only a wonderful medicine, it removes the inclination for any kind of bad diet. We realize that we have contracted our disease again, and for this reason, we have come
to you again to receive the medicine, because you are most beneficent when it comes to giving in charity. We believe that you will give us this nectar just to protect us. You see, try to understand very important point here. वो ये है कि जब हम लोग भगवान के महाप्रसाद को खाते हैं ना, महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं या ऑनर करते हैं, तो वो महाप्रसाद भी भगवान का धामृत ही माना जाता है। ठीक है ना? तो नेक्टर इज कमिंग फ्रॉम द लिप्स ऑफ लॉर्ड। भगवान ने क्योंकि उसे पाया हुआ है। तो अगर कोई हमें बोले कि क्या हमने भगवान का धामृत कभी चखा है, तो हम बोलते हैं यस। बिकॉज जब भी हम महाप्रसाद पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान के धामृत को ही करते हैं। शरीर अविद्या जाल, और उसमें जड़े इंद्रियां काहे कान, और जीवे फैले विषय सागर। जीव भी जो है ना, वो सारे के सारे विषयों का सागर है। तार मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति। और जीव है ना, बहुत ही ज्यादा सुदुर्मति है। ताते दिदा कठिन संसार है, इसकी वजह से संसार में रहना मुश्किल होता है। लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय, करी वारे जीवा जाए, स्वप्रसाद अन्न दिल भाई। तभी भगवान हमें, भगवान कृष्ण जो है बहुत दयामय है, और हमको महाप्रसाद अपना देते हैं। अभी एक बात और समझो कि वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। तो जीवा, उदर और पस्थ, यानी कि जीव, पेट और हमारे जेनिटल्स, ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं। और जो आदमी के अंदर सबसे पहला अनर्थ आता है वो काम का ही होता है, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। और काम का डायरेक्ट कनेक्शन पेट में, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हमें नाइटफॉल हो गया या फिर रात को गंदे सपने आए, उसको भी डेफिनेटली दूषित अन्न तो हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का पेट साफ ना हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो भी पेट के ऊपर, पेट से प्रेशर पड़ता है, जिसे जेनिटल्स से के रास्ते व्यक्ति अपने वीर्य को हो बैठता है। हम्म? तो उसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो जो हमारे भजन के लिए इंद्री है, वो जीव है, जीवा है। तो जीवा को हम जैसा खाना देंगे, वो वैसा ही हमारी कॉन्शियसनेस को डेवलप करेगा। और इस जीवा से ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है, और इस जीवा से ही हम लोग भगवान के दामृत को टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो 90% मेडिसिन है वो मुंह के रास्ते ही ली जाती है ना। और किसी एरिया को सुन करना तो एनेस्थीसिया उसी एरिया में दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, कभी बहुत ज्यादा बीमार होता है व्यक्ति तो उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो मेडिसिन होती हैं, ये शल्य चिकित्सा में आता है। शल्य चिकित्सा के अंदर ही क्या नाम है आपका, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह या टाके लगाना, ये सब शल्य विद्या का पार्ट है। लेकिन मोस्टली आयुर्वेद के अंदर पहले के जमाने में सारी की सारी दवाइयां जो होती थी वो मुख के रास्ते दी जाती थी। तो इसी तरीके से बता रही है गोपियां कि आपके आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे तड़प रही हैं और हमें काम से ग्रसित हैं, तो आपके जो अधामृत हैं उनका रस पाकर हम लोग अपने आप को तृप्त समझेंगे। एनीवेज, तो ये जो क्लिम था, ये गोपाल मंत्र का पहला शब्द है। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं गुरुदेव, कि द एसेंस ऑफ ऑल, द एसेंस ऑफ गोपाल मंत्र इज द सीड, क्लिम, कलम, translated in this verse as sweetly. It is combination of two Sanskrit words, ka, la. The fourth letter of the Sanskrit alphabet is called Vamadrasham, यानी कि Vamdrisham, यानी कि translated in this verse as the girl who have charming eyes. So as the English alphabet begin with A, B, C, D, the Sanskrit alphabet start with A, E, E. Huh? The fourth Sanskrit letter is E, that called Vamdrisham. So even grammar, the essence of grammar, it is the sound kala, kala, yani कि combination with the e becomes kli. And what is the meaning of the word
Manoharam in this verse. Ultimately, Manohar is Krishna. Manmohan, Manohar is Krishna's name. So he who attracts the mind, that same Krishna gave a portion of his quality of attracting the mind to Chandra, the moon god. The predominating deity of the mind is Chandra. And that moon has now taken the shape of Chandra Bindu, a dot. So in Sanskrit, this dot is called Anushwar. Anuswar. Thus, the word klim is complete. So by klim, each and every gopi thought that Krishna was calling her alone. Therefore, they all come to him. इसीलिए जब हम एज अ साधक गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो गोपाल मंत्र जो है हमें इंडिविजुअल लेवल पर हमारे स्वरूप की पुष्टि करता है. हमारे इंडिविजुअल लेवल पर हमें अपनी सेवा प्राप्त होती है. इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है. जो टाइम लगता है लेकिन गोपाल मंत्र होना बहुत अति आवश्यक है किसी भी साधक के लिए. Anyway, Jiva Goswami commentary is pretty practically the same as Vishwanath Chakravarti Thakur. ठीक है? There is some speciality, however, in the way he explained the word itar rag visma ranam niranam, यानी कि which refer to the taste for sense object in this world. तो विदासुर की प्रेयर है, जो विदासुर क्या कहता है कि आई हैव नो डिजायर for Swarg, nor I wish for Dhruva's planet or position. I also do not desire Brahma's post, even though Brahma has enormous power. And beyond that, I am not interested uh, in the cessation of birth and death. I do not want anything other than service to you with my body, the remembrance of you with my mind, and performance of your kirtan with my words. Wow. So gopis have a similar understanding. Those who take the medicine of the nectar of your lotus lips can easily forget their father and mother and dear wife or husband. Everything else of this world they can easily forget Sargaloka and Brahmaloka, and everything else up to and including impersonal liberation. The nectar of Krishna's lips emanates through his flute and then enters the ear of the listener. The ear then becomes like a tongue, tasting nectar, and the listener is able to forget all worldly considerations. Amen. The nectar of Krishna's lips emanates through his flute and then enters the ear of listener. The ear then becomes like a tongue tasting nectar, and the listener is able to forget all worldly considerations. How much more blessed is someone who directly tastes the nectar of Krishna's lips? One who does not have the extreme good fortune, but just hear that nectar is still very fortunate. Furthermore, if one cannot hear the sound of Krishna's flute, one may be able to hear about his pastimes. That person's also fortunate. So the gopis hear Krishna's flute, melody, and others such as the deer and the cuckoos also hear it. When the peacock hear and flute, they stop all their other activities and begin to dance. And those who see these pastimes
can also become free from their taste for anything else. The deer and the cuckoos are indeed fortunate, but the most fortunate are the gopis, who can directly taste Krishna's original Dhamrita. The deer and the cuckoos cannot relish the Dhamrit directly, but they can listen to Krishna's flute song. And there are others who can hear about Krishna's pastime. They hear that Krishna is playing his flute and that all human beings, animals, birds, and other creatures in Vrindavan are hearing his flute song. As a result of listening to the narrations of his pastimes, these persons too develop the ambition to hear his flute. They will certainly give up all desires to taste the form and qualities of the world. They will never want swarga or even liberation from birth and death. The Gopi says the nectar of the lips is so relishable that no one can criticize us for desiring to taste it. It is not only the ladies of the Braj who are attracted to that nectar. Even a dry male piece of bamboo called Venu wants it. And if a dry bamboo flute cannot give up this desire, what to speak of us? The nectar of Krishna's lips is not easily obtained. Ordinary devotees cannot have it, whereas Krishna's associates can get it through his Mahaprasad, and such as the remnants of his betel nuts. The taste, the beetle, and then the form of his remnant. He gives them his dharmita, the taste puri, rice, dal, pakoda, and other preparations, and his remnants are distributed as Mahaprasad. These remnants are also called Adhamrita. देखा मैंने बोला ना Mahaprasad can also be considered as Mahaprasad is also considered as Adhamrita. Only the advanced rasic devotee can realize that Mahaprasad is Krishna's Dhamrita. The ordinary devotee can certainly think in that way, but he cannot realize it. He may be conscious that it is Mahaprasad, but only an advanced devotee can actually relish it as such. कहते हैं ना महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवी यानी कि नाम महाप्रसाद गोविंद का नाम ब्राह्मण वैष्णव और गोविंद भगवान भगवान गोविंद भगवान गोविंद का नाम ये पांचों बराबर है और अगर इन पांचों में से किसी एक में भी श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति के पास पुण्य काफी नहीं है स्व अल्प पुण्य वतमराजम विश्वासने बजाए थे only an advanced rasic devotee can realize that Mahaprasad. So he may be conscious that it's Mahaprasad, but only an advanced devotee can actually relate as such. The 10th canto of Srimad Bhagavatam is the rasa itself. It's directly Mahabhav and Ras Raj, that is directly Srimati Radhika and Krishna. So if after honoring Mahaprasad, he wants to touch Srimad Bhagavatam, which is very heart of Krishna, we first wash our hands. But this rule is only for those practicing bhakti in this world. It does not apply to Krishna Association Golok Vrindavan. Both Sri Krishna's book, which narrates his nectarian pastime, and his Mahaprasad are he himself. Sometimes we take the Adhamrit from the lips, sometimes we take the Adhamrit from the eyes, sometimes we take the Adhamrit from the ears. कृष्ण कथा जो है वो भी अधामृत है लेकिन कृष्ण जो कथा है ना वो महाप्रसाद है क्योंकि कृष्ण की कथा पहले कृष्ण के द्वारा ही व्यास देव जी को और फिर व्यास देव जी के द्वारा हमारे गुरु वर्ग को सुनाई गई और फिर हमारे गुरु वर्ग ने हमको सुनाई तो ये कहते महाप्रसाद है तो इसीलिए श्रवण के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कहते हैं श्रवण इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द भक्ति वाओ सो मेनी रिलेशंस So as Mahaprasad is Krishna's Dhamrita, his singing or talking is and talking to anyone is also his Dhamrita. However, no one
except the gopis can taste his original adhamrit. The gopis are now weeping for this, and they will tell him, "We are dying because we are not getting it. We must be satisfied by hearing the nectar of Krishna's pastime." Okay. Because दादी माँ को फोन कर लो. ये खत्म. दादी माँ को फोन कर लो. Because no other type of Adhamritam is available for us, but the gopis wants only the original. So unlike others, they are not satisfied to simply take the remnants of beaten leaf and other preparations tasted by Krishna. For them, his lips, Adhara, are the Amritam. Nothing else will do. Jiva Goswami explained that the gopis' three phases, Surata Vardhanam, Shok Nashanam, Itar Rag Visma, Ranam Niranam, ठीक है, are all objective that qualifies the noun Adhamrita. मतलब सूरत वर्धना मतलब the ambrosia increases one's desire to drink it, huh? And makes one hanker to relish it again and again. Shokanashanam. If the nectar is received, all suffering is destroyed. The suffering is destroyed is the suffering of not seeing Krishna. If Krishna meets the gopis, they will taste the nectar and their suffering will immediately disappear. Ita rag visma ranam. Not only is suffering destroyed, but all kind of worldly attachments disappear immediately. So Jiva Goswami further explains that this Adhamrita is the supreme goal of human life. There are four general goals of life: religiosity, wealth, sense gratification, and liberation. यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. The fifth goal is Krishna Prema, पंच पुरुषार्थ. ठीक है? So the attaining this Adhamrita, the fifth goal is Krishna Prema, and ठीक है? In other words, it is final objective for those who hanker for Krishna Prema. He gives an analogy. If there are many flowers in one place, the combined aroma of those flowers consists of the fragrance of each individual flower. But we cannot distinguish the flower fragrance from another. Similarly, Krishna's original Adhamrit is very fragrant. It is the fragrance of the flute song, that is Adhamrita, coming through the flute. Both fragrances are mixed so intimately that it is very difficult to distinguish one from another. Only a Rasik Vaishnava can do. Another analogy may be given. We cannot separate milk from the mixture of water and milk. No, we cannot separate milk. So we taste both together as a single combined substance. But a swan can differentiate. The swan will drink the milk and leave the water. Similarly, Rasik Vaishnavas have the ability to distinguish between the nectar of Krishna's lips and the sound of his flute. तो दोनों चीजें कृष्ण के जो जो वैष्णव जो है वो समझ सकते हैं. They will be able to taste both. Their enjoyment will double. The Sora means tune, or more specifically trembling tune, the melodious emanating from Krishna's flute sound as if they are trembling, vibrating and wavering slowly from the high notes to the low notes, and from the low notes to the high notes again. Anyone who hears this tune will faint. Why does the flute sound like this? It actually has no control over how it sounds. It is maddened by tasting the nectar of Krishna's lips and is thus trembling. The gopis tell Krishna, your flute song intoxicates the entire world. If that flute is so maddened by the touch of the nectar of your lips, what will become of us if we taste it? Actually, we have already tasted it, which is why we are totally maddened. Now you should come and restore our life, and we are dying without the nectar.
हरि बोल। हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। माता जी, you want to say something? Rajwasi, you want to say हरे something? कृष्ण भोज। हाँ। वही मैं ही पूछना चाह रहा था। आई वांट टू जस्ट आस्क दैट दिस सूरत हैज ए सेपरेट अदर मीनिंग, और इट मींस ओनली द इट मींस दैट इट द थिंग व्हिच इंक्रीजेस आवर सेपरेशन और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ वो थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हो पाया। ये सूरत, सूरत, सूरत वर्धनम, सूरत जो है ना, सूरत का मतलब है सुरति विलास। यानी कि भगवान कृष्ण सु रहता, मतलब एक अलग तरीके का मिलन। ये शक्ल वाला सूरत नहीं है। ना ये, ना ये गुजरात वाला सूरत है और ना ये शक्ल वाला सूरत है। समझ रहे हो? ओके प्रभु जी। तो ज्ञान, इट ज्ञान इंक्रीजेस वर्धन का मतलब क्या होता है? ज्ञान आवर। प्राप्त करना ना। तो सूरत वर्धन मतलब, सूरत वर्धन मतलब तुम हमारे अंदर जो है ना, हमारे अंदर जो काम की क्रिया है, जो काम क्रीड़ा है, जो आपके साथ हमें हमें जो इंटीमेट पास टाइम करना है, उसकी इच्छा को बढ़ाते हो। ओके ठीक प्रभु है। जी। हाँ। कलौदी माता जी, वांट टू से समथिंग? नहीं प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आज के, बहुत सारे। विनीत बोलो। नहीं बाबू जी। समझ में आया नहीं क्लास? हाँ, नॉर्मल है। सूरत वर्धनम, शोक नाशनम। ऐसा था। चलो, वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। वो जी मैं बोल रहा था, जैसे हम लोग अभी इसे सारे बुक्स जैसे पढ़ रहे हैं, तो ये सारे जितने भी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी जैसे मान लीजिए गोपी गीत उठा लीजिए, तो हालांकि वो गोपियां जो है कृष्ण के सेपरेशन में बोल रही है, बट काफी डीप मीनिंग, मतलब बहुत कुछ चीजें इसमें से निकल के आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब उसमें सारा कुछ ही, मतलब एवरीथिंग इन वैष्णव फिलोसफी हमारे लिए जो भी चाहिए सब कुछ इसमें, मतलब उसमें मिल रहा है। मतलब जो भी चीजें हमें चाहिए, चाहे भक्ति के लिए हो, स्पिरिचुअल ब्लिस के लिए हो, अपने डिसिप्लिन के लिए, हर सारे चीज इंक्लूड रहा है। तो मतलब ये गोपियां जो गीत गाई हैं, तो मतलब ये इट इंक्लूड्स ऑल दी वैष्णव फिलोसफीज ऑफ लिटरेचर, मतलब सारा चीजें तो इसमें मिल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो एक बिल्कुल। चीज मेरा प्रश्न एक्चुअली ये में था। ये गोपी गीत जो है, वो तो स्टार्टिंग में हमने जब चर्चा करके उन्हें बताया था कि गोपी गीत देखने में तो ऐसा लगता है कि गोपियों ने गाए हैं, और जो गोपियां हैं वो कौन है? वो तो कोई अनपढ़ गंवार औरतें हैं है ना? देखिए, अनपढ़ गंवार अगर औरतें होती तो क्या इतनी सुंदरता के साथ भगवान की ग्लोरिफिकेशन करती? नहीं ना। नो नो। तो वही ना कि ये भी है कि जब कोई व्यक्ति भावरत होता है, तो उसके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। तो ये सब के सब, दे ऑल आर इंटॉक्सिकेटेड इन लव विद कृष्णा। दैट्स व्हाई ऑल देयर हार्ट इज कमिंग आउट, यू नो। सुरत वर्धनम, शोकनाशनम। मतलब कितना डीप मीनिंग है। हाँ। यस प्रभु जी। है ना? और स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। चुंबित किस और अबडेंटली किस। और वेणुनाद में तुम इस वेणुनाद पे किस करते हुए जा रहे हो, किस कर रहे हो? तुम अपने लाइक अमृतों का पान करवा रहे हो। इधर राग विस्मरण नीर नाम, वितर वीर रस ते अधामृतम। तो ये बहुत डीप है प्रभु। और ये सब कुछ है, डिसिप्लिन भी है, सेवा भाव भी है ना? भगवान के प्रति काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, और ट्रांसडेंटल मत्सर्य भी है राइट? यस प्रभु जी। चलो। एक चीज प्रभु जी, और एक चीज और बताना चाह रहा था। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर इसको, इफ इफ एनीबॉडी रीड्स इट, मतलब ऐसे अपने से पढ़ता है, तो अगर उसका मेटेरियल कॉन्शियसनेस होगा, तो वो ही विल थिंक समथिंग डिफरेंट, तो कुछ कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए या मेरे को ये। ये तो ऐसे ग्रंथ जो होते हैं वो केवल
तभी कहते हैं कि हमेशा किसी ना किसी गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। यस यस यस, मैं वही बोलने वाला था, तो हमें गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। अदरवाइज वी विल रीच टू सम अदर मीनिंग, क्योंकि मटेरियल कॉन्शियसनेस है वो वहां से हमें ड्रैग करके लेके चला जाएगा, तो हम लोग कुछ और सोच लेंगे। तो इसलिए मैं ना ये चीज मैंने बुक्स देखी थी, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं इसको। मुझे पता था कि किसी वैष्णव के अंडर में ही पढ़ना चाहिए। तो अभी वो फुल जो डिजायर था मेरा, वो कृष्णा ने कैसे कैसे फुलफिल भी करा दिया वो। तो मैं इसीलिए बिल्कुल पढ़ता भी नहीं हूँ। जब आप पढ़ाते हैं तभी मैं पढ़ता हूँ, अदरवाइज मैं अपने से उसके बाद फिर पढ़ने के बाद फिर ज्यादा ही रेफर इट। बट अपने से पहले से पढ़ना तो मैं वो पढ़ता नहीं हूँ। इसीलिए मैं बोला प्रभु जी एक बार बताएंगे तभी देन आई विल गो थ्रू इट। तो ये मेरा रियलाइजेशन एक था। वो जी, हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो। एक्चुअली मैं इसलिए सेफ समझता हूँ कि हम लोग श्रीला गुरुदेव की ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, श्रीला गुरुदेव की ही कमेंट्री पढ़ रहे हैं। वी आर एक्चुअली रीडिंग इट अंडर श्रीला गुरुदेव, who was a bona fide Vaishnav, who was a bona fide Vaishnava, right? So we यस all are प्रभु in the safer hand. ठीक है, यही एक खास बात है। कितनी अच्छी रियलाइजेशन हुई है आज कि गुरु की जो वाणी है ना, वो जो कृष्णा की जो फ्लूट है, साउंड ऑफ फ्लूट ऑफ कृष्णा है, वो गुरु हमें मंत्रों के द्वारा सुनाते हैं। और जैसे यस वो प्रभु। जैसे फ्लूट को सुनने के बाद सारी गोपियां सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में आ गई थी, हम लोगों को भी गुरु से मंत्र सुनने के बाद सब कुछ त्याग के गुरु की शरण में चले जाना चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। और हमें भगवान के जो अमृत है उसका पान जो है, वो अगर हम लोग अपने लिप से नहीं कर सकते हैं तो वो महाप्रसाद के रूप में कर सकते हैं। भगवान के सौंदर्य को देखकर भी हम भगवान के जो रूप को देख के, गुणों को सुन के, और उनकी लीलाओं को सुन के भी हम महाप्रसाद के धामृति है वो भी, है ना। तो भगवान के धामृत का पान जो है अपने कानों से भी कर सकते हैं, अपनी आंखों से भी कर सकते हैं, और अपने लिप्स से भी कर सकते हैं, मुंह से भी कर सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। और अगर हम लोग किसी वैष्णव के मुख से कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला को सुनते हैं तो एक्चुअली में वो महाप्रसाद के रूप में हमारे कानों में जाता है, क्योंकि उसमें हमेशा वैष्णव की अपनी रियलाइजेशन छुपी होती है। ऐसे एक बार मैं किसी बहस कर रहा था, ऐसी बहस क्या मतलब, एक आर्ग्यूमेंट हुआ छोटा सा। तो मैंने बोला, यार मैं मुझे एक चीज का बड़ा दुख होता है कि स्वयं सो वैष्णव जब भी बोल रहा है वो शिला नारायण महाराज की बुक से बोल रहा है, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दे रहा। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, शिला नारायण महाराज को भी जो रियलाइजेशन हुई थी वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से तो हुई थी। तो ही इज ऑल्सो स्पीकिंग फ्रॉम शिला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो देन मेरा क्वेश्चन ये था, तो मैंने उसको यही बोला, बोला नहीं, उन्होंने शिला रूप और सनातन या विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद से सुन के, उनके उनकी वाणी सुन के रियलाइज तो किया, साथ में उनके अपना जो अपना भजन था, उनके अपने भजन का और भजन से प्राप्त हुई रियलाइजेशंस भी उसमें इंक्लूड है। तो उनको बेशक रूप गोस्वामी का महाप्रसाद मिला हो, लेकिन हमें रूप गोस्वामी का महाप्रसाद मिलेगा, क्योंकि वो रूप गोस्वामी का जो महाप्रसाद था वो पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टेस्ट किया, फिर हमारे आचार्य ने टेस्ट किया और वो हमको दे रहे हैं। तो महाप्रसाद है। यू नो तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि भगवान जो है, उनकी जितनी लीलाएं हैं वो हमारे हृदय को हमेशा कोमल करती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी नाक, आँख, कान, मुंह और अपने शरीर को हमेशा अग्रसर रखना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। कि जब मौका मिले भगवान के दर्शन करो, जब मौका मिले भगवान को अर्पित फूल सूंघो, जब मौका मिले भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान के महाप्रसाद को आप पाओ। ठीक है, और जैसा मौका मिले अपनी शरीर से भी भगवान की सेवा करो। तो वट एवर डिस्कशन वी हैड, वी प्रे टू राधे श्याम गौरताई कृष्ण गुलाम शिला प्रभुपाद Srila Gurudev Ananta Koti Vaishnava to give us the blessing that we can always remain situated in our Swarup as a servant of Krishna and serve the divine couple
especially with our mind, body, and words. ठीक है, and attain the goal of life, that is राधा दर्शन वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।